Good morning, students. Hi, I am Sachin Kumar, your physical teacher. Welcome back to my YouTube channel, Sachin Kumar Physical Education and Game Class. So बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं आप लोगों के बीच, क्लास 12th का। सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा वो हमारा नया चैप्टर है? तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर 7। और इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली उसके आज इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। सो जो हमारा चैप्टर है वो है फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। बेसिकली पार्ट 1 हम इसका करने जाएंगे और इस चैप्टर में हमें वो सारी चीजें, वो सारे फिजियोलॉजी बॉडी की और इंजरीज जो स्पोर्ट्स गेम्स में होती है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की ओर जाने से पहले मेरी आप लोगों को सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपकी जो भी क्वेरीज और क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या संडे ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की स्पोर्ट्स में फिजियोलॉजी की। देखो, हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन है, अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं कि हमारी बॉडी के जो भी फंक्शंस हैं वो बेसिकली काम क्या करते हैं कि जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारी बॉडी के अंदर सिस्टमेटिक चीजें चलती हैं और उसको सिस्टमेटिक रूप से चलने के लिए हमारे डिफरेंट तरीके के फैक्टर्स होते हैं। और खेलों में चोट लगना एक आम बात होती है। जिस तरीके से अगर हम बात करें कि खेल में अगर किसी को चोट लग जा रही है तो वो किस तरीके की चोट है और वो चोट के कारण क्या है, वो चोट की सिचुएशंस क्या है। लेकिन हम बात करेंगे आज फिजियोलॉजी पे कि जो उसके इंट्रोडक्शन की कि फिजियोलॉजी होती क्या है। तो आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, उस वीडियो में आप जाइए और उस वीडियो से आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो क्या काम करती है, किस तरीके से क्या क्या होता है उसमें। तो चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, वीडियो की ओर। Hey guys, it's Medicosis Perfectionalis. Welcome to my new series on physiology. Today's topic is an introduction to the great field of physiology. So let's get started. So let's break this word down. Physiology. From the Greek words physis and logia. Physis means origin or nature. Logia means the study of. But we are not talking about every kind of physiology. We are talking about human physiology because this is called Medicosis Perfectionalis. Let's define human physiology. It's the study of function of the human body and its mechanisms. So anatomy was the study of structure. Physiology is the study of function. Not only function, the mechanism by which we carry out this function. Physiology is all about regulation and communication. Your body is well regulated and it has excellent communications. You have fast communications through the neurons and slow ones through the endocrine system. As you know, the cell is the basic living unit or the building block of your body. How many cells do you have? Around 100 trillion cells. That's amazing. Just think about that. Your body, a coordinated solution. Let's talk about the internal environment, or as they say it in French, milieu intérieur. So your body has 60% of its weight just water. This 60% is subdivided into the intracellular compartment, which is inside your cells, and it's 2/3 of the 60%. And the rest is the extracellular fluid outside of your cell, and this is 1/3 of the 60%.
Suppose that your weight is 100 kilograms. 60 kilograms will be waters, which is equal 60 liter because the density of water is 1. Hello, physics. So intracellular is 2/3 of the 60 liters, which is about 40 liters. The extracellular is the rest, which is 20 liters. Total is 60. Makes sense? Your cells literally live in the extracellular fluid. These are your cells, and here is the extracellular fluid surrounding the cells. That's why we call the extracellular fluid the internal environment. The ECF is the internal environment. What's the ECF? It's water, of course, with ions, oxygen, nutrients, and the bad stuff, the waste products. So we have the good stuff and the bad stuff. Ions such as sodium, chloride, and bicarbonate. Nutrients such as amino acid, fatty acids, and glucose. The building blocks of protein, fat, and carbs. Waste products, CO2, which is going to go to the lung to be exhaled out, and some other garbage stuff going to the kidney to be excreted in the form of urine. Back to our story of the ECF. ECF is circulating in your blood, coming out of your heart in a vessel called an artery, then to the capillaries, and then there is diffusion to the tissue, and then back to the vein, and then back to the heart, and this is the cycle of the ECF. In other words, the ECF is everywhere. That's why it's the internal milieu. Now let's turn our attention to the intracellular fluid. What's inside the cell? Again, water with ions, but different types of ions. You have potassium, magnesium, phosphate ions. This is different from the extracellular fluid, which had sodium, chloride, and bicarbonate. These are different stuff. Now, I'm not saying that you will never find sodium in the cell. No, I'm just saying that sodium is more common outside of the cell than inside. By the same token, potassium can also be found outside of the cell. It's just more common intracellularly. These ions keep flowing in and out, in and out. They are regulated. We call this ion concentration difference, and we will talk about that later. In the next video, we will talk about homeostasis, not to be confused with hemostasis. These are totally different. So, I strongly urge you to subscribe and hit the bell to get notified when I release my next video on homeostasis. Also, I'm available on Facebook, Twitter, SoundCloud, Instagram, and you can support this channel on Patreon. You'll get early access. You can request individual videos on certain topics and plus extra perks. Thank you so much for watching. This is Medicosis Perfectionalis. As always, be safe, stay happy, and study hard. सो बच्चों, आप लोगों को आई फुल बहुत अच्छी लगी होगी ये मेरा पार्ट 1. सो नेक्स्ट पार्ट अब मैं लेके आऊंगा. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.